Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. May I audible? Yes, ma'am. By the way, Priyadashini, Yes, ma'am. tomorrow Sunday दिन ମୁଁ ତୁମର doubt clear classes ରଖିବି, okay? Then next Okay. week ରେ ତୁମର exams କରିବି। Yes, ma'am. And continuously अभी exams ରହିବ। Continuously ମାନେ ମାନେ next week ରେ maybe ଗୋଟେରେ ରଖିଦେବି। Then ତମର ଯୋଉ ଅଛି ନା ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କଣ କହିଲ? ଯୋଉ math ଟା ତମର ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଛାଡିଛି। Ma'am, Aristotle dictum. Aristotle's dictum, direct and indirect reductions. Okay. Yes, ma'am. ସେଇ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ ମୁଁ ତମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ତମର ୟୁନିଟ୍ 5 ମିକ୍ସୋଲୋଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ସ କରିବି। ଓକେ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? No, ma'am. ବାକି ତମମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ତମର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଇଟା ମିକ୍ସୋଲୋଜି ତ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତମର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତମର ରିଡକ୍ସନ୍ସ ଆଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଦେନ୍ ତମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏକ୍ସାମ୍ସ କରିବି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 and ଏଇଟା ତମର ୟୁନିଟ୍ 5 ଟା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର? ବିକଜ ଅଫ ଯେହେତୁ ତମର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନା ତ ଏକ୍ସାମ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲି? Yes, ma'am. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଯୋଉଟା ଆମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା। ହଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ତମର ଏ ସବୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ ଯେବେ ଯେବେ ତମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ରଖିବି ଯାହା ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ରଖିବି ତା ଆଗରୁ ତମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାसेସ୍ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ତମର କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଦେନ୍ ତମର ଏକ୍ସାମ୍ସ ଗୁଡା ଏପଟେ ୟୁନିଟ୍ ତିନିଟାକ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ତମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବାକି ଦିଟାକ ୟୁନିଟ୍ ସେ ସେମିତି ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ନେଇଯିବା। ନହେଲେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ କାହାର ଡାଉଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନଥିବ ତ ଅସୁବିଧା ନା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରି ଅଛ ନା କାହାର କିଛି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କୁହ ସମସ୍ତେ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରିକି କୁହ ମତେ। Yes, ma'am. ଆଉ ୟେସ୍ ବାକି ମ୍ୟାମ୍। ବିଷ୍ଣୁ, ଅନିଶା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର नहीं मैम किसी नहीं କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? नहीं मैम मैम कौन ଏକ୍ସାମ୍ସ ମାନେ ତମର ଏଇ ୱିକ୍ ପରେ ତମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 5 ତମର ଏକ୍ସାମ୍ସ ରଖିବି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବୋଥ
खाली एग्जाम्स रे तमरे तीनटा को यूनिट जेमते समस्तंकर मते क्लियर दरकार दैट्स व्हाई ता पूर्वरो डाउट क्लियर क्लासेस रखिबी डोंट वरी all of you okay this Yes, ma'am. Yes, sir. Yes. then first previous class रे जोटा पढी थिले सेटा के डिस्कशन कर दबा what is rebuttal क्या आंसर दबा विष्णु wait विष्णु आज्ञा मैम what is rebuttal मैम मो पढ़ी नहीं तो आउ के कहि परिबो प्रियदर्शनी Yes, ma'am. आंसर दियो what is rebuttal Uh, rebuttal is refuted it as opposite conclusion is arrived by taking the premise consistent with the proposed ones. The method of refutation of dilemma is called as rebuttal. very good then by proving the major premise is weak रे by taking the one horn हेरिका में सेरा पढ़ीवा ना Yes, ma'am. okay then it means kono na the premise of a dilemma can be shown as materially false by proving the weakness of the major or the minor premise or both the premises that's why हमको proof करे को पड़े both major premise रे भी तार कोन weakness अछि and minor premise रे कोन तार weakness अछि okay then major premise रो weakness को माने दीटा way अछि जानिया पई कि गोटे होछि by taking the dilemma by one horn and by taking the dilemma by two horns कौन कौन अछि first होछि by taking the dilemma by one horn and by taking the dilemma by two horns ए दीटा मेथड द्वारा आमे प्रूफ करि परिबो दैट मेजर प्रेमिस क्या वैलिड रहउछि या रेपुटेड करूछि डिलेमा को कि नाही इज दैट क्लियर Yes, ma'am. next by taking the dilemma by one horn here one of the hypothetical proposition in the compound hypothetical proposition is to be shown as materially false एठी हमें कोन देखियो पाउचे जे the hypothetical proposition in the compound hypothetical proposition is to be shown as materially false compound hypothetical proposition रे हमें देखिया को पाउचे जे कोन both data का hypothetical proposition materially false रहउची this can be done by showing that the consequent of such a hypothetical proposition does not necessarily follow from the antecedent तो एठी कोन माने प्रूफ कोन होची दैट एठी शो करूची द consequent of such a hypothetical proposition consequent ता जो hypothetical proposition है consequent सेटा फॉलो करूनी काहा को antecedent तो कोन पे फॉलो करूनी बिकॉज़ ऑफ कोनोसी प्रकार की छोडे मे बी वीकनेस अछि दैट्स व्हाई सेटा को फॉलो करू नाही हमर रूल्स कोन सब बेले consequent ता antecedent को कोन कले फॉलो करे ना फॉलो करेनी मैम फॉलो करे मैम फॉलो करे बट एठी कोन कोची एठी जेहेतु फॉलो करू नाही तो एठी कोन देखा जाउची हमें तो सेटा रिफ्यूट करूची मेजर प्रेमिस से रिफ्यूट करूची ओके देन for example if one of the hypothetical propositions in the dilemma is if man is destined to die then walking is useless तो मते एठी को antecedent कोटा consequent कोटा if the man is destined to die then walking is useless आधरे antecedent कोटा consequent कोटा के कहबो मैम मैन इज डेस्टिन्ड टू डाई सेटा antecedent working is useless सेटा होची
तो मते को एटार मीनिंग कोन दीटा को जो रहिला तार मीनिंग टा कोन आमे कोन पढिलु हमर कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट को फॉलो करूनी तो एठी जो रहिला कोन इफ द मैन इज डेस्टिन्ड टू डाई इट मींस जदी गोटे मनीष कोन मरिया पई कि तार बनै सारछि त मन बनै सारिछि देन वर्किंग इज यूजलेस देन ता हिसाब रे कोन मु तो मरिबी काम हरिका काई कि करबी आमे जदी आम माइंड रे गोटे थॉट रखी दबा जे ऑब्वियसली हम माने जानिछु मनीष माने मरणशील से माने दिने ना दिने मरिबे किंतु आमे जदी थॉट टा रखी कि चलीबा जे मते दिने ना दिने मु मरिबी तो काम कोन पे करबी हां ना नहीं तो एटा फॉलो करूची कि ता एंटीसीडेंट को फॉलो करूची कि No, ता ma'am. एंटीसीडेंट को मैम करूनी No, ma'am. then here the consequent working is useless does not necessarily follow from the antecedent man is destined to die. Hence, the assumption made in the major premise of the dilemma is wrong. This being so, now no conclusion can be established. Thus, the dilemma is refuted by taking one horn. Taking one horn, बुझिपालो देखो एठी तमरो गोटे रहिला antecedent गोटे रहिला conclusion. Okay, तमे जो compound hypothetical proposition पढुचो सेठी कोन गोटे हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रहउची कि दीटा हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रहउची देन एठी जदी हम गोटे को नबा गोटे हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस नबा तो से गोटे हाइपोथेटिकल तमरो दीटा हन तुमको काली कोन कहितली से दिन प्रीवियस क्लास तुमको कोन कहितली दीटा हन को कोटा Ma'am, compound hypothetical proposition. कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन माने दीटा जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस रहउची तो दीटा को होची गोटे हॉर्न गोटे सिंगल हॉर्न आ गोटे सिंगल माने टोटल होची दीटा हॉर्न तो आमे जे गोटे हॉर्न ने कि हम जजमेंट ता काढीबा सेटा ऑब्वियसली फॉल्स अब ऑब्वियसली हमर डिलेमा ता रेफ्यूट करिवो इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर तो मु जोटा डाकुची अभी का लेखो किछि शॉर्टली लिखिबो ओके पॉइंट वाइज करी लिखिबो हेडिंग लेखो टेकिंग बाय वन हॉर्न हेडिंग देला समझसे ओके मैम this mode of refutation मैम ठीक है मोड स्पेलिंग टा MODE mode this mode of refutation consists CONSISTS consist in showing that one of the constituent propositions मैम की प्रपोजिशन constituent propositions constituent proposition माने कोन क्या आंसर दबो बोथ First प्रेमिस chapter एंड अच्छी। कंक्लूजन both premises and conclusion very good of the compound hypothetical
is materially false. मैम of the compound पर है Hypothetical is materially false. yes ma'am समझे लिखिला मात्र रिपीट करूची. This mode of refutation consists in showing that one of the constituent propositions of the compound hypothetical is materially false. Then next point लिखो. It is seated in the ये मैं आउथरे it is seated in the seated होची कोण CITED seated complex destructive dilemma. It is seated in the complex destructive dilemma. Ma'am, author adopting the data. Second point लिखो. It is seated in the complex destructive dilemma. लिखा है समस्तଙ୍କର यस मैम समस्त लिखिला Yes. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. If man is destined to die, then walking is useless. ma'am if man is destined to die, yes ma'am then walking is useless. Working is useless. yes ma'am लिखा है समस्तଙ୍କର यस मैम आउ थे एई जिंसटा तुमको बुझे दोची. If man is destined to die, then walking is useless. Here, the consequent walking is useless does not necessarily follow from the antecedent. এটা necessary করুনি যে antecedent को সেটা follow করিয়া बोली. Okay. From the antecedent, man is destined to die. Hence, the assumption made in the major premise of the dilemma is wrong. This being so, no conclusion can be established. Then the dilemma is refuted by taking one horn. Okay. It means कौन आमे literally आमे बुझिया को पाइले जे आमे जदि compound hypothetical ले गोटे hypothetical माने taking by one horn गोटे hypothetical basis रे नेकी आमे जदि ताको proof करिया पई चाहूचे then सेटा obviously wrong assumption हबो. कौन पाइना एठी जो example आमे देला if man is destined to die then walking is useless. तो एटा होजी बिल्कुल ही wrong. बिल्कुल ही रॉन्ग आमे कहि परबेनी कारण एमती बहुत लोक एग्जिस्ट करूछंती बट नेसेसरली एटा एंटीसीडेंट को फॉलो करबो सेटा मैटर सेटा टोटली भी हबन. ओके दैट्स व्हाई हमरे अजम्पशन टा रॉन्ग हिला तो हमें गोटे हॉर्न को नेकी हमें डिलेमाटा कोन करबो रेफ्यूट करि परबो ना करि परबोनी करि परिबनु करि पारिबू
refuted of dilemma माने dilemma कोन major premise रो weakness refuted माने कोन जेमति तमर as usual तमने fallacy पढुछ ना तो dilemma रो refutation of dilemma होची that one type of okay तो आमे गोटे हॉर्न ने कि आमे जदि dilemma टा valid कि invalid proof करि परबा देन हमर कोन सेटा invalid भरिबो refute करिवो is that clear all of you मैम जो मैटेरियल फॉल्स सेटा टिके कहि देबे materially false होची कोन तमर both the premises रो weakness okay the major premise रो weakness and the minor premise रो weakness रहिले materially false एटा हबो बुझियला आज्ञा विष्णु अनीशा जितेंद्र प्रियदर्शिनी Again, ma'am. Yes, ma'am. बुझियला समस्तंको Yes, ma'am. Yes, sir. next by taking two horns here both the hypothetical propositions in the compound hypothetical proposition are to be shown as materially false it means कोन सेठी हमें देखले गोटे हॉर्न को नेले हमर materially false बारुची ओके एठी भी से कोन कहले हमें दीटा को मेजर प्रेमिस जो वीकनेस टा अछि से दीटा को प्रेमिसेस को ने कि माने तुम दीटा को हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन ने कि भी सेटा कम बारुची materially सेटा false रहउची this can be done by showing that the consequence of the two hypothetical propositions do not necessarily follow from their respective antecedents एठी कोन कहउची जे दीटा consequence जो hypothetical proposition रहिची सेटा do not necessarily follow from their respective antecedents तर antecedent को necessarily से follow करू नाही this makes both the hypothetical propositions weak which in turn makes the major premise weak एठी कोन होची ना both the hypothetical propositions weak हे जाउची consequent जेतले तुम antecedent को follow न करिवो obviously सेटा entire hypothetical proposition टा weak हे जिवो तो एठी कोन एठी सेमति entire तमरो compound hypothetical proposition कोन हे जाउची and weak हे जाउची okay for example if the major premise is if the train is going to arrive late if the train is going to arrive late then waiting is unnecessary waiting is unnecessary eta hochi tomar first hypothetical proposition next second hypothetical proposition kon and if the train is going to arrive in right time then waiting is unnecessary a meaning ke कहबो मते के कहबो प्रियदर्शिनी मैम जदि ट्रेन टा आसबो माने पहुंचबा पय लेट कोची ताले हमर वेट करबा अनेसेसरी देन पुन जदि ट्रेन टा राइट टाइम रे आसे पहुंचुची ताले हमर वेटिंग करबाटा भी अनेसेसरी may I audible यस मैम मु किछि क्वेश्चन करली बोदे जदि ट्रेन टा देरी रे आसुची
ଆମର waiting କରିବା unnecessary ନା justified? waiting କରିବାଟା waiting କରିବାଟା unnecessary ନା justified? Justify. Justified. How? necessary जितेंद्र Yes ma'am. justified केमती? हम ट्रेन ना से तो वेट करिवो ना. ट्रेन लेट रे आसिलु अच्छा. आमे अल्टरनेटिव भी ट्रेन नहीं परिबो ना नहीं परिबोनी? Yes ma'am. नहीं परिबो देन हमरो टाइम वेस्ट होला ना नहीं आमे जदी अननेसेसरी हमर टाइम टा वेस्ट करिले से जगह रे करिले ना करिले Yes ma'am. तो आमे 2 आवर आमे ता पई कहन कि टाइम वेस्ट करिवो ता पे कि हम जो जगह रे हमर पहुंची डेस्टिनेशन जो जगह रे थिबो तो अलगा को सोर्सेस रे जे पळेबोनी कोन पे तो टाइम हमरो ऑब्वियसली हमरो रहिबो ना रहिबोनी किछ तो टाइम हमरो रहि जिवो तो एटा अननेसेसरी होला ना जस्टिफाइड होला? Unnecessary. Unnecessary होला. Then and if the train is going to arrive in right time then waiting is unnecessary. It means जदि ट्रेन ठीक टाइम रे आसुची समस्त आंसर दियो जदि ट्रेन ठीक टाइम रे आसुची देन हमर वेटिंग करबाटा अननेसेसरी ना जस्टिफाइड? Unnecessary. केमती होला? जस्टिफाइड अरे ट्रेन तो राइट टाइम रे आसुची आमे तो ठीक टाइम रे पहुंची गए छी ठीक टाइम रे आमे ट्रेन धर देगी पळी जे परिबो तो एटा अननेसेसरी केमती होला? अननेसेसरी होला कि? Ma'am. तो डिफरेंस बुझी होला? फर्स्ट हमक कोन कहूची जदि ट्रेन हमर लेट रे आसिला वेटिंग करबाटा अननेसेसरी एटा होची करेक्ट. देन जदि हमें जानिबो ट्रेन टा लेट रे आसिला हमें लेट रे आसीबो काहे के बेकार हमें टाइम वेस्ट करी के आसीबो करिबोनी हम पाकर अल्टरनेटिव कोन हमें सोर्सेस अलगा सोर्सेस से पळे जाय परिबो हमर डेस्टिनेशन पॉइंट पाखको तो अननेसेसरी हमर टाइम सेठी से जगह वेट करियाटा भूल. देन ट्रेन जदि राइट टाइम रे आसिला ऑब्वियसली राइट टाइम रे आसीबो हमें वेट करी थिले ही हमें कोन ट्रेन संगे संगे आसीबो हमें संगे संगे जाय परिबो ट्रेन टाइम रे हमें आसी पहुंची जिवो हमें संगे संगे हमर डेस्टिनेशन पॉइंट को में जाय परिबो तो एटा थोड़ी ना अननेसेसरी एटा तो जस्टिफाइड होची ना होनी. इट मींस तमरे जो दीटा हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन देखिलो से एंटीसीडेंट को फॉलो करूची कि हां कि ना एंटीसीडेंट को फॉलो करूची ना करूनी विष्णु? विष्णु आज्ञा मैम किसी पचारुची सोनी पाइले कोना सोनी पाइले तमरो जो दीटा एग्जांपल रहला दो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस रो फर्स्ट होची कोन जदी हमर ट्रेन लेट रे आसुची हमर वेट करबा अननेसेसरी. ओके एटा जस्टिफाइड ना अनजस्टिफाइड? अनजस्टिफाइड. ऑब्वियसली अनजस्टिफाइड कोन पे ना देखिबा जदी ट्रेन लेट रे आसुची हां हमें आधा घंटा वेट करबा घंटे वेट करबा कि घंटे वेट करबानी हमें हमर डेस्टिनेशन पॉइंट रे अलगा को सोर्सेस से जाके पळी जिबा. ओके फर्स्ट सेकंड जो तमरा हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन देला ट्रेन जदी ठीक टाइम रे आसुची इफ द ट्रेन इज अराइविंग एट राइट टाइम देन हमर वेटिंग करबा अननेसेसरी एटा जस्टिफाइड ना अनजस्टिफाइड? जस्टिफाइड. केमती जस्टिफाइड होला?
ट्रेन अस्पताल અને વેટ આઉટ કરે ମୁଁ ଧର ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ଥିବ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଟ୍ରେନ ଧର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ରେ ଆସିଲା, ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରେନ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ର ବି ଆନ୍ସର ଦବା ଦରକାର ନା, ଏମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ କରିଦେବେ, ଏମିତି ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ କହିଦବ, ତାର ପ୍ରପର ତାର ଦିଅ ରିଜନ ଦିଅ, କଣ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, କଣ ପାଇଁ ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ। ट्रेन राइट टाइम रे आसीला, ओके, इफ मु जदी ऑन द स्पॉट राइट टाइम रे जदी पहुंची जीबी, से टाइम रे जदी मु पहुंची जीबी, त मु ट्रेन धरि परिबि ना धरि परिबि? ट्रेन टाइमिंग ଆଜ୍ଞା अछि ମ୍ୟାମ୍ 10 ଧରିପାରିବି बेले, ट्रेन टाइमिंग अछि 10 बेले, ओके, मु सपोज 9:15 टाइम भी 9:15 टू 10 भितरे जदी पहुंची जीबी, मु ट्रेन को धरि परिबि ना धरि परिबि? ଧରିପାରିବି धरि परिबि। तो मते ଆଜ୍ଞା वेट भी करिया दरकार नहीं, कहीं एग्जैक्ट टाइम मते जणा अछि, त मु से टाइम भितरे मु मैम पहुंची जीबी। कुह कुह अरे कुह। देन एठी हम कोन देखिला, हम एंटीसीडेंट हम कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट को फॉलो करूची की? कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट को फॉलो करूची की? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କରୁନି करूनी, दैट्स व्हाई हम अजम्पशन टा राइट हैला ना, वैलिड हैला ना इनवैलिड हैला? इनवैलिड ହେଲା हां कुह। मैम हां कुह कुह। मैम आपण जा कहले टिक आउतरी कोन, मोर नेट प्रॉब्लम होची, सुबुनी मते। मु क्वेश्चन करथिली जे तमरो जो फर्स्ट जो रहिला जे ट्रेन जदी लेट रे आसीबो, हमर वेटिंग करबाटा नेसेसरी ना, माने जो आंसर देछि हमर अननेसेसरी, देन सेटा जस्टिफाइड ना अनजस्टिफाइड? Here, hence the assumption made in the major premise of the dilemma is wrong, as the two hypothetical propositions in it are materially false. This being so, no conclusion can be established. Thus, the dilemma is refuted by taking both the horns. Okay, किसीटा डाकुची लेखो ऊपर heading दियो, taking by both horns या taking by two horns. हेडिंग देलो समझते? यस मैम। देखो, this mode of refutation मैम फर्स्ट टू डाकिबे। first डाकुची, this mode of refutation मैम रेपुटेशन और रेप्यूटेशन? refutation consists in showing that both the constituent propositions ଆଉଥରେ ମ୍ୟାମ୍ showing ଟିକେ that both बोथ द मैम। this mode of refutation consists in showing that both the constituent propositions
of the compound hypothetical premise are materially false. Memo of the compound. Hypothetical premise are materially false. Ma'am, Premise are false. compound. Ma'am, premise are. Compound hypothetical premise are materially false. Next point लिखो. It is seated in the complex destructive dilemma. ଲେଖା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point example दियो. If the major premise is, if the train is going to arrive late, if the train is going to arrive late, then waiting is unnecessary. Many if the train. If the train is going to arrive late, Yes, ma'am. then waiting is unnecessary. Our hypothetical proposition kona? And if the train is going to arrive in right time, then waiting is unnecessary. लिखिलो समझते? Ma'am, right time. Ma'am. Then waiting is unnecessary. ଲେଖା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ consequent ଆମର କଣ waiting is unnecessary ଦିଟା କ hypothetical premises रे या hypothetical propositions रे does not necessarily follow from the antecedent माने काहाकू the train is going to arrive late and the train is going to arrive in right time. Okay, hence the assumption made in the major premise of the dilemma is wrong, as the two hypothetical propositions in it are materially false. This being so, no conclusion can be established. Thus, the dilemma is refuted by taking both the horns. Is that clear? Major premise ର weakness कोनटा? को where रे हमें major premise ର weakness जानिबु? Answer दियो. अनीशा? अनीशा? मैम कौन कहले आउथर क्वेश्चन टा? मु कहिली को वे रे हमें मेजर प्रेमिस रो वीकनेस टा जानि पारिबु. अनीशा Yes, ma'am. को वे रे जानि पारिबु?